What is up guys, welcome back to the channel. It's your boy Anirudh. So after it's been 6-7 months since I promised that next video is going to be a Q&A video. It's been 7 months and now finally वो हम Q&A video आज करने वाले हैं. So मेरे पास सारे screenshots हैं जो आप लोगों ने questions मुझसे पूछे थे एंड जैसे मैंने प्रॉमिस किया था मेरा रूम टूर एंड मेरी जो हॉट व्हील कलेक्शन है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा. So let's get right on to the video. Let's try to make it a very small snappy 10-minute video and इसमें सब कुछ कवर अप कर दें. So let's go. So हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है cal.exe. ये मेरे काफ़ी ओल्ड सब्सक्राइबर है एक्चुअली एंड ये इंडिया से नहीं है. तो इनका फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ where do you source most parts from? So as you guys माइट नो जो कि मेरे चीज़ कस्टम वाले पेज को फॉलो कर रहे हैं, मैंने उसके बारे में भी प्रॉपर अपडेट नहीं दिया था, बट बेसिकली जो मेरा चीज़ कस्टम अब पेज है दैट इज़ फॉर यू गाइस. एंड जो भी आप सर्विसेज अपने कार्स को मॉड करने के लिए या मेंटेन करने के लिए रिपेयर करने के लिए आपको जो भी सर्विसेज चाहिए वो मैं सब ऑफर करता हूँ फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम ऑल द स्पेयर पार्ट्स for your Octavias, basically all the cars, but I specialize basically in Octavia Mark 1 VRS, Polo GTs, Laura. Mostly जितने भी parts है आपको, if you are looking for parts, you can find everything from spare parts, genuine German spare parts. I deal in brands like Febi, Mele, Cortico, all these high-end German brands. Obviously, I also deal in all the fun aftermarket stuff, ranging from racing seats, intakes, exhaust, intercooler, piping, exhaust systems, even interiors. If you have any need, you can hit me up on Cheat Customs Instagram page and I'll hook you up with definitely the best prices in the market. जो इनका फिर first question है that is कि कहाँ से मैं source करता हूँ parts. You know where to hit me up. Cheat Customs. Any part that is needed, just slide into the DMs. I'll make sure to find you the best deal in the market. So इनका जो second question है, please do more videos in full English. So now the thing is, ये almost 2-3 years पुरानी बात होगी जब एक VRS वीडियो में ही मैंने पूछा था कि if you want to see more of हिंदी stuff, तो मैंने पोल किया था एंड उसमें 60-70% of you guys wanted to see हिंदी videos. तो now what I try to do is मैं बैलेंस आउट करता हूँ हिंदी एंड इंग्लिश के बीच में, क्योंकि मोस्ट ऑफ माई सब्सक्राइबर बेस दे वांट टू सी हिंदी वीडियोस. तो काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट आती है कि इंग्लिश वीडियोस करने को, बट अनफॉर्चुनेटली वो मैं नहीं कर सकता कि मोस्ट ऑफ यू गाइज 70% ऑफ यू गाइज वांट टू सी हिंदी वीडियोस. तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ टू बैलेंस आउट बाय डूइंग अ मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी. नाउ सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है हमारे फ्रेंड दैट गाय द ब्लैक स्कॉटा से, हाउ मच यू बाय द कार एंड नाउ हाउ मच हैव यू स्पेंड. सो मैं रफ एस्टिमेट्स देता हूँ, 3 to 4 lakhs का पकड़ लेते हैं, 4 ऑन द हाई लिमिट. मैं उसमें बॉर्ड्स में इन्वेस्ट कर चुका हूँ. सबसे एक्सपेंसिव जो एक्सपेंडिचर था दैट वाज व्हील्स एंड अलॉयज. हैंड्स डाउन वो सबसे एक्सपेंसिव मॉड था जो मैंने कार पे किया था, बट डेफिनेटली वर्थ इट. कार लुक्स डिफरेंट, कार फील्स डिफरेंट, कार हैंडल्स रियली डिफरेंट. वही जो मॉड था दैट कॉस्टेड अराउंड 1 lakh. आई वुड से रियली गुड बैंग फॉर द बक. दो आई एम प्लानिंग टू सेल ऑफ दिस VRS ताकि वी कैन मूव ऑन टू बिगर एंड बेटर थिंग्स. So the next question is, how much did it cost to build your car? So as I have mentioned before, मैंने अभी कार की recently green tax भी paid हो गया. Now it's valid for 5 more years. That's the plus point. So next question है हमारा, why don't you install aftermarket body kits which look dope? Personally, I am a very huge fan of Octavia Mark 1 VRS का जो body lines है. It actually is very timeless and जो उसका design है, the squarish body design, I love it. उसकी स्टॉक बॉडी है. एक्चुअली इट डजंट नीड एनीथिंग टू मेक इट लुक इवन बेटर. उसके ऊपर एक्चुअली मैंने लोगों को देखा जो लोग मॉड करते हैं, बॉडी किट्स लगाते हैं उस पर, इट डजंट रियली टर्न आउट टू बी दैट गुड लुकिंग. बट मैंने बहुत सटल कॉस्मेटिक्स मॉड किए हैं कार में, जैसे व्हील्स उनमें से एक हो गया. एंड देन नेक्स्ट थिंग वॉज, मैंने ऑक्टाविया मार्क 1 VRS का जो विंग है वो उतार के मैंने लॉरा VRS का उस पर स्पॉइलर लगाया विच इज़ अ लिटिल मोर एग्रेसिव. तो बहुत सटल सा वो इम्प्रूवमेंट है एंड द कार लुक्स मच मोर क्लीनर फ्रॉम द बिहाइंड. एंड बट पर्सनली आई एम नॉट अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ मार्क 1 पे बॉडी किट्स. देयर आर फ्यू कार्स लाइक सिविक फॉर इंस्टेंस, उसकी बहुत गंदी बॉडी किट्स भी आती है एंड बहुत सटल. फॉर एग्जाम्पल म्यूगन RR किट होगी, दैट सिविक पे म्यूगन RR बॉडी किट, इट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. बट
वन थिंग, आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ फेक बैजिंग. तो अगर आप म्यूगन आर किट लगा के उसमें म्यूगन आर के बैजेस लगा रहे हो या टाइप आर के बैजेस लगा रहे हो, नॉट माई थिंग. आई डोंट फील दैट्स राइट. आई होप आपका क्वेश्चन ही आंसर हो गया. I don't think cosmetically you can actually do a lot to the body and make it look better. Stock for me with subtle cosmetic mods वो कार अच्छी दिखती है, otherwise no. So next question आ रहा है हमारा दीप मैक 18 से. उन्होंने क्वेश्चन पूछा है what is the upcoming car on my channel. So as of now अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब जुलाई 22, हमारी जो न्यू प्रोजेक्ट कार है चैनल की वो एक्चुअली नीचे खड़ी है. मैं एक हिंट दे सकता हूँ, आई वोंट रिवील द कार राइट नाउ, उसकी रिवील वीडियो डिफरेंट होगी, बट मैं एक हिंट दे सकता हूँ दैट इज़ इस पूरी वीडियो में जितनी भी 10-15 मिनट्स लॉन्ग वीडियो होगी मैं उस कार का नाम ज़रूर एक बार मेंशन करूँगा प्रॉपर्ली. सो लेट्स सी इफ़ एनी ऑफ यू गाइज कैन फिगर इट आउट कौन सी वो न्यू कार है, एंड आई एम श्योर यूल बी स्टोक्ड टू सी कि मैं क्या प्लान करूँ उस कार के साथ. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर यू प्लानिंग टू अपग्रेड द टर्बो. आई हैड थॉट अ लॉट अबाउट अपग्रेडिंग अ टर्बो इस कार पे. देर आर 2 राउट्स जिसमें मैं जा सकता हूँ. वन इज़ OEM प्लस टर्बोज जैसे कि हो गया KO4. अगर KO4 नहीं देन KO3 हाइब्रिड. अदरवाइज यू कैन गो कम्प्लीटली कस्टम राउट्स लाइक अ GT28 RS. बट नाउ द थिंग इज़ विद दीज बिगर टर्बोज द चांसेस ऑफ यू थ्रोइंग अ रॉड इज़ वेरी हाई, क्योंकि इन इंजन में सबसे जो वीकेस्ट पॉइंट है दैट इज़ द रॉड्स. सो आफ्टर दिस पॉइंट अभी फॉर इंस्टेंस माई कार इज़ मेकिंग 250 हॉर्स पावर. आफ्टर दिस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द पावर यू आर मेकिंग, क्योंकि इट्स वेरी ईजी टू ब्रेक रॉड ऑन दीज कार्स. तो विद अ टर्बो अपग्रेड आपको सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में रखनी है दैट इज़ दैट यू नीड टू अपग्रेड योर रॉड्स. एंड अगर आप रॉड्स नहीं अपग्रेड करें, मैं मान लो मैं KO4 डालता हूँ या फिर मैं GT28 RS डालता हूँ, आफ्टर स्पेंडिंग लाइक ऑलमोस्ट मिनिमम लाइक 2 lakhs, दैट इंक्लूड्स ट्यूनिंग द टर्बो, न्यू प्लम्बिंग, न्यू ऑयल लाइन्स एंड ऑल दैट स्टफ. ऑलमोस्ट 1.5-2 lakhs में खर्चता हूँ. Even after that I won't be able to push the turbo to its limit because of my drawback engine ka, that is the rods. If you're planning to do a turbo upgrade on a Mark 1 specifically, I personally recommend ki you go with forged rods. But in my case I wasn't and I still am not ready for that kind of commitment कि मैं engine खुलवा के अपनी rods replace कराऊँ and then again spend 2 lakhs on the turbo setup, tuning, all of that just to spin tires on 3rd gear. Personally I don't feel the need to make it more powerful as it sits now on 97 octane tune which pushes around 240-250 horsepower. It is more than enough. I don't even use half of the power on day-to-day basis. No for a turbo upgrade on the Mark 1 VRS. Now the next question is wide body to your VRS when. So as I mentioned before, I don't plan on doing anything major to the body. Max to max if I मान लो if by chance अगर मैं कार रखता हूँ for the next 5 या 10 years, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस कार को एक रीपेंट कराऊँगा. इसके जो few patches, dings and dents वो मैं रिपेयर कराऊँगा and I'll make it look immaculate but nothing to the body. Absolutely nothing to the body. And maybe a different set of wheels but nothing more than that. Next question है हमारा मॉड्स फॉर Mark 1 TDI. अगर बहुत सिंपल रखना है, बहुत लो की रखना है आपको कार, तो यू कैन बेसिकली जस्ट गो फॉर अ स्टेज 1 ट्यून, एंड इफ़ यू वांट अ लिटिल मोर टर्बो नॉइजेस देन यू कैन गो फॉर स्टेज 1 ट्यून प्लस एन इनटेक एंड दैट्स इट. बट अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा पावर बनानी है एंड यू वांट टू गो अ लिटिल ओवरबोर्ड देन यू कैन गो फॉर अ DCAT सेटअप, अपना DCAT डाउन पाइप एंड मे बी अ मफलर एंड योर इनटेक like a proper cold air intake and stage 2 tune, and you'll be pushing a crazy amount of torque and horsepower on your stage 2 Mark 1 TDI, and it produces a lot of stupid amount of torque and it'll be a very fun car stage 2 pe. I don't know what exactly meant by mods, but I am considering you were asking performance mods, so I'll list it again: intake, exhaust and a stage 2 tune if you're planning to go a little overboard. Otherwise a stage 1 tune and a filter, that's it. So now moving on. So यहाँ पे Godara 1213 says you have a great taste of cars. Thank you so much, I really appreciate that. They are asking
what will be your next car. So I have already mentioned that जो हमारी next project car है, जो channel के लिए जो project car है, that is already down there, and by now I have mentioned that car twice. Soon उसकी review video भी आएगी, and till then you can just keep guessing, and if you have some ideas let me know in the comment section. I'm actually very stoked for it. Let's see what you guys think जब वो मैं कार रिवील करता हूँ, उसका जो मेरा प्लान है उसके साथ, फिंगर्स क्रॉस्ड जो मेरा दिमाग में जो मेरा आइडिया है उस कार के साथ, that comes to reality. So, next question is, are you going to install a Java IHI turbo? No, as I have mentioned, I don't really plan on going for a turbo upgrade on this car, because as I have said, even if the car pushes like 240-250 horsepower right now as it sits 97 octane पे, it's too much power for too little roads. यहाँ पे you don't really have long stretches in Mumbai जहाँ पे you can go and really push out the car while being safe and keeping others safe. एक ही stretch है that everyone knows as Mexico, that is the sea link. Other than that, roads are not really the best. For daily driving, I don't even use half of the power that the car is making, so it doesn't really make sense going a bigger turbo and investing like 3 or 4 lakhs more into the car, because it's not just the turbo, it's going to be tuned, it's going to be all the supporting mods, and it definitely, if by chance I do turbo upgrade अपनी कार पे, तो definitely I'll be doing rods as well, क्योंकि मैं वो उस रिस्क के साथ नहीं जीना चाहता कि one fine day my rods will say bye bye. I would rather spend that 4 lakhs. I can get a new car for that. More from the future, हमसे पूछते हैं कि I am planning to get a Mark 1 VRS. What are, so if you are getting a car जिस पे कोई भी सर्विस रिकॉर्ड्स नहीं है and ओनर को आइडिया नहीं है कौन सी चीज़ कब हुई थी, कब लास्ट सर्विस हुई थी, कब टाइमिंग किट चेंज हुई थी एंड ऑल, एंड मान लो आपकी कार ने 75,000 किलोमीटर्स के ऊपर कर लिया और उससे अगर 70 से कम भी मान लो 50 चली हुई है, फर्स्ट थिंग व्हेन यू गेट द कार, मैं सबसे पहले जो रेकमेंड करूँगा चीज़, दैट इज़ get the timing kit changed. Timing belt, अपना timing tensioner, water pump, then idler pulley, ये timing kit में सारे parts आते हैं, ये सब change करो, thermostat change करो, अगर clutch is on the way out, clutch change करो, fluids का अगर idea नहीं है कब change हुए थे, लेते ही 5W40 4.75 लीटर्स डलता है, and a oil filter, just top up with new fluids, and अगर जैसे मैंने बताया to save this engine, सबसे important चीज़ है timing kit, वो time to time आपको करनी चाहिए. And if you're pushing a lot of power, I would suggest जो timing belt है वो हम replace करें with a Kevlar belt that I am planning to definitely install. Gates की Kevlar belt आती है, वो मैं install करूँगा instead of the rubber belt. So yeah, as I said, fluids, अगर timing kit नहीं हुआ है, timing kit, and if the clutch is on its way out and clutch या फिर उसकी life ख़त्म हो चुकी है, a clutch. Fun fact, जितनी चीज़ें भी मैंने सारी मेंशन की, ये मेरे सारी चीज़ कस्टम की जो मेरा बिजनेस पेज है उस पर सारी चीज़ें लिस्टेड है, एंड ट्रस्ट मी द बेस्ट प्राइसिंग अवेलेबल इन द मार्केट. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मिस्टर सुरन की तरफ से कि एनी प्लान फॉर न्यू कार एंड फ्यूचर में कौन सी कार बाय करोगे. एज आई जस्ट आंसर्ड, हमारी जो न्यू कार है वो नीचे खड़ी है, एंड सून आई बी रिवीलिंग दैट कार. टिल देन कीप गेसिंग. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ देयर वाज वन थिंग दैट यू कुड फिक्स अबाउट द Mark 1 VRS इन जनरल, व्हाट वुड इट बी. तो रियली नाइस क्वेश्चन. पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इस कार में जो सबसे ख़राब चीज़ है दैट इज़ द मॉड्यूल्स, इलेक्ट्रिक मॉड्यूल्स. इसके चारों डोर लॉक मॉड्यूल्स, इसके चारों विंडो रेगुलेटर मॉड्यूल्स एंड उसके फ्रेम में इस कार पे रिप्लेस कर चुका हूँ. सो एंड इट इज़ वेरी इरिटेटिंग. बहुत छोटी सी चीज़ें हैं ये, बट इट्स लाइक इट पिसेस यू ऑफ. जो आपके डोर स्विचेज़ है, आपके जो विंडो स्विचेज़ है, दे गो बैड, एंड ये बड़ी इनकन्वीनियंट सी चीज़ है ख़राब होना. Not expensive per se, but it's just irritating when it goes bad. And इसके basically जो कार के मॉडल्स at this point 16-17 years old है, so they have also started to show their age. मान लो जो इतनी लंबी लंबी वायरिंग लूप्स है इस कार में, कहीं पे भी छोटा सा निक होगा, कहीं पे भी ओल्ड वायरिंग है, मॉड्यूल का जो वोल्टेज ड्रॉ है वो कम हो जाएगा. वोल्टेज ड्रॉप है वो एक सर्टन रहता है, बट ड्यू टू द ओल्ड वायरिंग उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, वायरिंग की कम जाती है वायरिंग के थ्रू, एंड जो वो मॉड्यूल है देन इट स्टार्ट्स एक्टिंग फनी जब उसको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलती. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम GTR Boy X. ही इज आस्किंग 2002 Honda City 1.5 or 1.5 vtec a good car to build. Yes, definitely, but as I have mentioned जो 1.5
vtec के प्राइसेस है वो थोड़े से स्काई रॉकेट हो चुके हैं इस समय। मार्केट में बहुत कॉमन सा स्कैम चल रहा है कि पीपल आर लिस्टिंग नॉन vtecs एज vtec। वो क्या करते हैं, जाके सेकेंड हैंड मार्केट से वो vtec के वैल्व कवर्स ला के वो ऊपर लगा के दे सेल ऑफ द कार स्टेटिंग इट्स 1.5 vtec। टू गुड टू बी ट्रू टाइप्स आपको प्राइसिंग लगती है फॉर अ 1.5 vtec, इट्स मोस्ट लाइकली बिकॉज कि वो फेक है। एंड पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग कि मेरे को एक कार डीलर बताया था कि वो दे इवन गेट लाइक द डॉक्यूमेंट्स ऑल्टर्ड टू से 1.5 vtec। आई डोंट नो हाउ ट्रू इज दैट, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि लोग वो कर रहे हैं। सो बी केयरफुल आउट देयर। एंड पर्सनली अगर आपको 1.5 बजट में बिल्ड करनी 1.5 होंडा सिटी, आई वुड से जस्ट गेट अ नॉर्मल 1.5। एंड अगर आपको रेकर्स के यहाँ या फिर आपको सेकेंड हैंड इंजन्स के यहाँ से अगर आपको 1.5 vtec का हेड मिलता है, यू कैन जस्ट स्वैप द हेड एंड यू आर गुड टू गो। होंडा इज लाइक अमेजिंग कार्स टू बिल्ड एंड काफ़ी इंडिया में मॉड कल्चर तो है ही व्हेन इट कम्स टू होंडा। आई वोंट से इट्स द बेस्ट, बट काफ़ी क्लीन एग्जांपल्स हैं होंडास के इंडिया में भी, एंड जिनको देख के आई एम ऑल्सो लाइक वाओ, आई वांट टू बिल्ड अ होंडा। So yeah, if you are planning for a 1.5 VTEC, I wish you all the best for your project. Now, coming on to the next question, do the videos on English rather than Hindi possible, bro? Love from Kerala. Thank you so much, bro. Again, as I have mentioned, most of my subscriber base wanted me to make videos in Hindi. Like almost 70% of you guys wanted me to make videos in Hindi, so that's what I'm doing. And but मैं बीच में ट्राई ये करता हूँ कि मैं बैलेंस आउट कर दूँ हिंदी और इंग्लिश को, ताकि रिव्यूअर्स है जो दोज हु जस्ट अंडरस्टैंड इंग्लिश है उनको लिए थोड़ा सा ईजियर हो जाएगा टू स्टिल अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स इफ आई एम टॉकिंग इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. So now the next question is by Ishwar Bhosle. What is your qualification? Basically, I am a law graduate. I have done my law from New Law College, Bharatiya Vidyapeeth. I have done BBA LLB. So I'm a law graduate, but I ended up choosing my passion over my degree for now. I would say, though it's not something that I don't really want to continue in the future. Law is something I spent 5 years on, and I have a professional degree for it. So at any point in time when I want to switch my careers back to law, I can definitely do that. But for now, I wanted to see what YouTube, what Instagram, what my business has to offer. So right now I'm making a decent earning out of it. So I'm happy doing that, and I'm happy doing what I am doing right now. But again, law is something I definitely would love to continue maybe in the future. So Mr. Vedant is asking, give detailed costing of your VRS car price plus whatever mods you have done. So this is a very good idea, but ये इस वीडियो में फिट नहीं हो पाएगा. So I can actually make a detailed video just regarding the VRS पे mods मैंने आज तक जो की है उसकी pricing and all, so that you have a rough idea मेरे गाड़ी पे काम क्या क्या हुआ है, कितने का हुआ है. So thank you Vedant for the idea. So I'll make a detailed video on the VRS. So Vrishank asked me, what would be your next car? And for time I'm answering you that yeah, new car is already here, just wait for the reveal video, that's it. Now next question is total build cost for the stage 2 Mark 1. Okay, so again वो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, so basically doing a build breakdown on the VRS, उसमें ये भी टॉपिक आपका कवर हो जाएगा. So मोहम्मद अरसलान खान asked me, how do you source parts? So he wanted to know how I source my parts, but now even he has a Mark 1 VRS. He recently bought a Mark 1 VRS, and he's one of my first clients. Basically the entire car Mr. Aslan ki ban rahi hai, that is basically all the parts that he has bought from me. If you ever want to see a clean example of Mark 1 VRS, you can definitely check out his Instagram. So Mr. Hari asks, what all first mods would you recommend for the Polo 1 liter TSI manual? 1 liter manual TSI, again intake, exhaust, stage 2 remap, that's it. You can go for the big brake kit. Big brake kit के लिए big brake kit में I sell big brake kit for Polos that basically uses a Mark 1 VRS caliper, Mark 1 VRS size के जो rotors है 288 mm and yellow stuff pads. Pads you can choose according to yourself, but you can go for a big brake kit after you are making like a decent amount of power on stage 2. Then you should definitely consider looking at some suspension mods. You can go with like a B6 strut setup and
maybe some lowering springs by either Cobra or Iba. So yeah, very simple, very straightforward build, does the job. They are quick, they are fun to drive. And so the next question is by Mr. Hari. He's asking for my Hot Wheel collection ka tour. So once I'm done with all these questions and answers, then I can actually show you around my room and show you my entire Hot Wheel collection. So the next question is by Mr. Ayush. He is asking if I know of any good tuners in Nagpur. Yes, I do, and my great friend Sameep, even he owns a MK1 VRS, great build, next to none in the country. I love his car. Amazing guy, very talented, very smart guy, and he owns Code 6 Nagpur. And if you're looking for any kind of suggestions for your builds, any kind of performance related work or tuning, hit him up. This is his IG, he'll hook you up. Mr. Godara asked me, how do you earn? As I mentioned you guys, I have started my business jahan pe I am offering you guys services which includes everything from basically spares, services, modifications, aftermarket parts, and services include everything: maintenance services, cosmetic services, and detailing services, everything under the sky. If you have anything that in your head that you want it to come true and you want to do it in a budget, you can definitely hit me up. That's how I earn, and my second source of income is YouTube. So next question is by Mr. Ashwin. Straight by exhaust from MK1 VRS, company name. I assume you are asking for a setup for your car. I don't know, or you want to know exhaust setup for my car. So if you're looking for exhaust setup for your car, then you can hit me up on Cheats Customs. Cheats Custom पे आप मेरे को DM कर दो जाके. लाउड चाहिए, माइल्ड चाहिए, आपको वेल्वेट्रॉनिक चाहिए, जैसे भी आपको सेटअप चाहिए, you have to just DM me on Cheats Custom. And अगर आप मेरे सेटअप के बारे में पूछ रहे हो, it's basically catalyst downpipes 3 inch का that goes into a vibrant USA का resonator and back through a exhausted. That's it. मेरे पूरे कार में I just have a single muffler, and it's not even a muffler, that is basically just this big of a resonator. That's it. So the last question from Instagram is where did I get my alloys from? There's a page called 44 Wheels on Instagram. वहाँ पे आप जाके उनकी collection check कर सकते हो. Now coming to the YouTube questions. First question is, what is your dream car? Till I was in school, my dream car used to be a Aventador, Lamborghini Aventador in orange, and I have a scale model of that car right here on my shelf. मैं आपको जब room tour दिखाऊंगा मैं आपको दिखाऊंगा. But now as I have grown up from Lamborghini, I've shifted to Porsches. So I know Porsches are like meant to be driven, and they're like meant to be thrashed on a racetrack. That's what I love about Porsche. To me, my favorite Porsche would be a GT3 RS, and that's my dream car. Maybe one day on this channel, who knows. Second question is, why don't you make Sunday drive vlogs? By the way, love from Hyderabad. Thank you so much. Sunday drive vlogs. So I have few vlogs recorded, but every single Sunday it's not that fun. कई बार काफ़ी monotonous सा भी होता है. I just meet few of my friends, same cars, same group. That's it. It won't be like that fun to watch every single Sunday का vlog, because it will get monotonous. But जब कुछ fun events होते हैं Sundays को, I record all those. But again मेरे को edit करने का और upload करने का time नहीं मिला. So you'll see few Sunday vlogs as well. Next question is, where did you find the MK1 VRS and bought it? So I started looking for a MK1 VRS on OLX. That's where I found the car from. Almost 8-9 months research किया था. That's when I found my car, which I really liked, and that car was in Nagpur. Luckily my dad was posted in Nagpur that time, so he could go and take a look at the car. He liked it. He took the car to Skoda, made sure the car is in good condition. The Skoda guys gave a green flag, so you can go ahead and buy the car. That's when I bought the car. VRS भी वो मैंने directly customer से ली थी, और जो अभी मैंने new project car भी ली है वो भी मैंने directly customer से ली, but both through OLX. Next question is from Gautam Sanju. Says love from Bangalore. Thank you so much, bro. My question is, what you actually do for a living, and what about studies? So as I mentioned, my source of income right now comes from YouTube.
and my cheats customers. I'm earning money by providing you services. Your guys' dreams come true. I'm making a living out of it, and I am also in return getting the money to invest more on cars. So that's how the cycle goes. So a year back I completed my law. I'm a law graduate who's modifying cars. So Mr. Deepa says, doing well bro, love from Kerala. Thank you so much. He has 3 questions. So first question is, what about WRC spec spoiler? It looks good, but I don't think I want to pull that look off on my car, because मेरा जो इस कार के साथ goal था, that was to make a sleeper or a very sleek looking car, like a stealthy car. WRC makes very apparent कि आपकी car modified है. So the second question is, any update related to the wheels? तो जो कार पे जो wheels है मैं already upgrade कर चुका हूँ from 16s to 17s. तो वो जो wheels का भी वीडियो है वो बहुत जल्दी मैं एडिट करके मैं पोस्ट करूँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, एंड जो स्टॉक व्हील्स थे वो मैं सेल भी कर चुका हूँ. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ एनी कॉइल ओवर अपग्रेड. तो बाई चांस अगर ये मैं कार रखता हूँ फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years, तो मैं फिर भी प्लान कर सकता हूँ इन्वेस्टिंग लाइक $1 lakh ऑन कॉइल ओवर्स. अदरवाइज आई डोंट प्लान ऑन इन्वेस्टिंग इन कॉइल ओवर्स, क्योंकि अगर मुझे बेचनी है, इट मेक्स मोर सेंस कि अभी कम से कम इसमें पैसा लगाऊँ. इफ़ आई वांट टू सेल द कार, इट मेक्स मोर सेंस टू नॉट इन्वेस्ट एनी मोर मनी इनटू द कार. आई होप I answered all your questions, guys. Enjoyed the video till now. Now the second half of the video, जहाँ पे it's more fun, because I am going to show you my Hot Wheel collection. I'll give you a small walk around my room. So let's start. चलो, now let's start with the Hot Wheels and मैं starting से दिखाता हूँ. यहाँ पे कार्स है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, ये जो कार्स हैं मेरे कलर स्पेक्ट्रम के हिसाब से अरेंज की है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर. हमारी जो फर्स्ट कार है यहाँ पे है एस्टन मार्टिन 1, कमिंग टू अ क्लासिक, दैट इज़ अ 67.8 फायरबर्ड. एक मॉरिस मिनी 2016 की BMW M2. देन यहाँ पे हमारे पास है 2017 की ऑडी RS6 हैव अवेंटाडोर. यहाँ पर ही मेरी ड्रीम कार, दैट इज़ अ पोर्शे 911 GT3 RS. I love this car and I will end up getting this car one day. यहाँ पे हमारे पास 2020 Jeep Gladiator, 2017 Nissan GTR R35. ये है Lotus Spirit S1. Pro Stock Camaro, basically these are like the drag cars. This is a 2017 Acura NSX. Right next to that we have Acura Integra GSR. Next to that we can see हमारी है यहाँ पे हमारी Lambo Huracan. We have a Corvette C7. Funny story with this, ये मैंने C7 ली थी and मेरे पेरेंट्स गए थे ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से they got me a C7 सेम कलर में. they had no clue कि मेरे पास है, but funny thing, this is a hard top and this is a convertible, this is a soft top. Basically a same car, but ये ऑस्ट्रेलिया से, ये ली थी मैंने इंडिया से. बस 2013 वाइपर, 69 Dodge Charger, one of my favorites RX-7, M4, हमारी Porsche 917. ये रही हमारी इंडी 500 ओम कार. ये रही हमारी 70 Chevelle, हमारी फास्ट एंड फ्यूरियस की 70 Ford Escort RS 1600. Again, one of my favorites, Subaru WRX STI. This is a 2016 Civic Type R hatch, 2016 Ford GT race car, and oof, this is one of my top 5 cars. This is a Nissan Skyline GTR R33. Right next to that another GTM car, that is a 96. This is a 96 Nissan 180 SX. उसके नीचे we come here to a muscle car, Dodge Challenger. यहाँ पे हमारे पास है 2015 Mustang GT convertible. This mom dad again वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से लेके आए थे. Not a really big fan of this car, but I like it. यहाँ पे again we have a Morris Mini, but in a different color. यहाँ पे हमारे पास है 2017 Pagani
आयूरा, हमारे पास यहाँ पे 2015 जैगुआर एफ टाइप प्रोजेक्ट 7, यहाँ पे हमारी अगेन अनदर मूवी कार दैट इज़ फास्ट एंड फ्यूरियस से हमारी 70 डॉट चैलेंजर्स जो उन्होंने आई बिलीव जो प्लेन से उन्होंने नीचे उतारी थी, दिस वाज द कार, द फोर्ड फोकस RS। ये हमारे पास एंडरसन की फेयरलेडी Z, अगेन 96 180 SX बट डिफरेंट लिवरी में है, ये ड्रिफ्ट लिवरी में। राइट नेक्स्ट टू दैट हमारे पास है टोयोटा सुपरा, यहाँ पे है TMC डिलोरियन, हमारी नेक्स्ट कार रही रेनॉल्ट स्पोर्ट RS, दिस इज 63 एस्टन मार्टिन DB5, अगेन ये भी मॉम डैड लेके आए थे। दिस इज वर्ल्ड फेमस R34 GTR Paul Walker की from the movie Fast and Furious, again a very iconic car, the Toyota Supra, the white Toyota Supra from the Fast and Furious। यहाँ पे I have the only electric car पूरे collection में, this is a Tesla Model S। यहाँ पे we have a Ford Maverick, again one of my favorites, यहाँ पे Honda Civic EF। यहाँ पे we have 1985 Honda CRX, 73 Pontiac Firebird, a 71 Porsche 911, हमारी कलेक्शन की लास्ट कार बैंड माइक की 2015 Mazda Miata MX-5, this has a rotary engine, a crazy car, I really love this car, and that's all of my Hot Wheels collection, it looks really beautiful। तो ये वीडियो मैंने ऑल ऑफ अ सडन मैं रात के 3 बजे इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज आई एम अगेन शिफ्टिंग द हाउस। सो अब ये जो व्यू है तुम्हारा हमारे पीछे वाला ये चेंज होने वाला है, एंड आई डोंट थिंक मैं नेक्स्ट घर में मेरे को ऐसी एक एग्जैक्ट स्पेस मिलेगी जहाँ पे ऑल द कार्स ऑफ माई कलेक्शन इतने प्रॉपरली लगेगी। सो फील रियली बैड, एवरीथिंग नीड्स टू कम ऑफ। मैंने कहा चलो एक बार लास्ट टाइम हम वीडियो बना लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोग पूछ भी रहे थे। सो या देयर यू गो, इज़ माई इंटायर कलेक्शन। थोड़ी सी और कार्स हैं मेरे पास बट दिस इज़ माई मेन कलेक्शन। दिस इज़ माई सेटअप। यहाँ पे आई हैव माई लैपटॉप, माई ट्रस्टवर्दी लैपटॉप। दिस हैज़ i7 हैज़ अ GTX 1050 4GB, 8GB ऑफ रैम। मैंने रैम अभी तक अपग्रेड नहीं की, आई वॉन्ट टू, आई विल इन फ्यूचर। दिस माई लवली Logitech 502 mouse, I really love this, I use this for editing and a little bit of gaming, I really love this mouse, and this is how my setup looks। This is a 32-inch TV जिसको मैंने HDMI से कनेक्ट कर रखा है। One thing if you'll notice, this TV just floats, इसमें वायरिंग नहीं है, जितनी भी वायरिंग है ये मैंने वॉलपेपर लगाया, वॉलपेपर के पीछे है सारी वायरिंग। When you look at it from a distance, you can see कोई वायर नहीं दिखती नीचे आती हुई, just from the plug बड़े odd स्पेस पे, वो जो उसका स्विच बोर्ड था वो काफ़ी ऑड स्पेस पे था, आई कुडंट डू एनीथिंग विद दैट। बट रेस्ट ऑफ द सेटअप लुक्स वेरी क्लीन। टीवी के पीछे आई हैव LEDs, टेबल के पीछे आई हैव LEDs, गिव्स अ रियली नाइस लुक टू द सेटअप। मे बी इसके बाद वाला सेटअप होगा इससे थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बट फॉर नाउ दिस डज द जॉब एंड आई रियली लाइक माई कोजी लिटिल सेटअप। नाउ कमिंग टूवर्ड्स हेयर, दिस इज़ अ वेरी नाइस A3 साइज़ में मिनिमल सा आर्टवर्क, ब्लैक एंड वाइट। यहाँ पे देयर वाज माय गिटार हैंगिंग ओवर इट, यहाँ से इसका स्टैंड फेल आउट, बट एनीवेज मैं अभी जो पैकिंग कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू मूव, सो इट डजंट रियली मैटर, मैं वापस नहीं लगाया। फॉर नाउ मेरा गिटार वहाँ पे पड़ा है। ड्रेसिंग टेबल, इफ यू टर्न इट ऑफ मिडनाइट, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पेंडेंट लाइटिंग। ये मैंने ख़रीदी थी अपना अमेज़ॉन से, एंड बाजू अमेज़ॉन से लिए थे, दे लुक वेरी नाइस। यहाँ पे ट्यूबलाइट थी वो उतार के आई रीराउटेड द वायरिंग वाइट कलर में, सो इट डजंट रियली लुक ऑड, एंड ये रही मेरी लाइटिंग। एंड जितने भी एलिमेंट्स थे दे ऑल वर वुडन ग्रेन, मैंने सब पे उस ग्रेन में थे, बट मैंने सब पे विनाइल रैप लगाया एक्चुअली, बिकॉज वाई नॉट, हर चीज़ मॉड करनी होती है। सो मैंने एलिमेंट्स पे ब्लैक रैप लगाया, लुक्स वेरी स्लीक, गिव्स अ वेरी स्लीक लुक। ब्लैक कर्टन्स, दिस इज़ अ ग्रे कर्टन। वहाँ पीछे LED हेलमेट के ऊपर एंड हेलमेट के साइड पे। These are my shelves from Amazon, very cheap. I'll post a link if you want. Black color की shelves है, minimal, looks really nice. Planters है, और यहाँ पे मेरी रही Aventador,
एंड ये रहा मेरा प्राइड एंड जॉय 3 pieces ऑफ Porsche GT3 RS एंड नवग्रिन का एक A3 साइज पोस्टर जिसमें इट मेंशंस द कॉस्ट, द रिकॉर्ड्स एंड द फैक्ट्स। एंड ये रहा मेरा रेस्ट ऑफ द रूम, दैट्स माई वार्डरोब। ऑलमोस्ट खाली हो चुका है क्योंकि उसमें से मैंने कपड़े शिफ्ट करने हैं। एंड या दिस इज माई बेड। अब नाउ आई विल बी मूविंग इन अ न्यू हाउस विद इन फ्यू डेज़, तो वहाँ पे जो भी सेटअप होगा मैं आप लोग को दिखाऊंगा। आई होप यू गाइज enjoyed दिस डिफरेंट काइंड ऑफ अ वीडियो जिसमें मैं कार्स पे काम नहीं करूँ, तो इवन टिल नाउ लाइक इवन नाउ एवरीथिंग इज़ कार रिलेटेड, बट आई होप यू गाइज enjoyed दिस डिफरेंट काइंड ऑफ अ वीडियो जिसमें यू गॉट टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट माई सेल्फ। मेरे बारे में थोड़ा पर्सनली जानने को मिला आप लोग को। एंड आई होप यू enjoyed दिस वीडियो। काफ़ी लेट हो गए, टाइम देखने क्या हो गया, टाइम इज़ 3:30 AM, सो आई हैव टू गेट अप अर्ली ऑल्सो। आई डोंट नो हाउ विल आई गेट अप, बट आई रियली वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो बिफोर आई शिफ्टेड। अगर आप बाई चांस आप लोग को मेरा कोई डेली लाइफ व्लॉग देखना है या फिर आपको यू वांट टू लुक मोर इनटू माय पर्सनल लाइफ, इफ़ यू वांट टू सी दैट काइंड ऑफ अ वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो रिवॉल्विंग अराउंड माई डे, नॉट जस्ट फोकस्ड ऑन द कार। सो डू लेट मी नो, कोई भी सजेशन है वीडियो के लिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, स्टे savage.